The next question is a tightly stretched string fixed at x equals to 0 and x equals to L is initially in equilibrium. It is set vibrating and initial velocity b sin cube pi x upon L. Find displacement. Solution. That string OA y0t ylt, that is x axis, y axis, point P, x y, x and y. That is a vibrating string. String. Vibrating string. Boundary conditions of length L. Boundary condition y0t equals to 0 equals to ylt. 1 y x0 equals to 0, 2 del y upon del t equals to 0, velocity b sin q pi x upon L, that is 3. ये बाउंड्री कंडीशंस है. और वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. वो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू c1 cos kx c2 sin kx c3 cos ckT c4 sin ckT yxt. डिस्प्लेसमेंट y0t c1 c3 cos ckT c4 sin ckT इक्वल्स टू 0 और c1 इक्वल्स टू 0. c1 0. c1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करें, yxt इक्वल्स टू c2 sin kx c3 cos ckT c4 sin ckT. ylt c2 sin kl c3 cos ckT c4 sin ckT इक्वल्स टू 0 और sin kl इक्वल्स टू 0 sin n पाई k इक्वल्स टू n पाई अपॉन l. yxt इक्वल्स टू c2 c3 cos n पाई x n पाई ct अपॉन l c2 c4 sin ck पाई t n पाई ct अपॉन l sin n पाई x अपॉन l. yxt इक्वल्स टू सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to infinity yn xt n equals to 1 to infinity cn
cos n pi Ct upon L plus dn n pi Ct upon L sin n pi x upon L, where C2 C3 equals to Cn, C2 C4 equals to Dn, and y x0 Cn sin n pi x upon L equals to 0 or Cn equals to 0. Then the equation will be Cn n equals to 1 to infinity dn sin n pi x n pi c t upon L sin n pi x upon L. Differentiating. Differentiating del y upon equation 4 del y upon del t equals to sigma n equals to 1 to infinity dn n pi c upon L cos n pi Ct upon L sin n pi x upon L at t equals to 0, del y upon del t at t equals to 0, n equals to 1 to infinity dn n pi c upon L sin n pi x upon L equals to boundary condition b sin cube pi x upon L 1 upon 4 3 sin pi x upon L minus sin 3 pi x upon L. d1 pi c upon L sin pi x upon L, d3 3 pi c upon L sin 3 pi c upon L, d2 2 pi x upon L plus d3 3 pi c upon L sin 3 pi c upon L plus up to so on b upon 4 3 sin pi x upon L minus sin 3 pi x upon L. तो ये अब इनके sin pi x upon L और sin 3 pi x upon L का कोएफिशिएंट इक्वेटिंग कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स d1 sin pi c upon L equals to 3b upon 4 और d1 equals to 3b L upon 4 pi c, d3 3 pi c upon L equals to minus b upon 4 और d3 equals to minus bl upon 4 pi c, d2 d4 and up to so on 0. Then equation yxt equals to n equals to 1 to infinity dn
साइन n pi c t upon L sin n pi x upon L. d1 3b L upon 4 pi c sin pi c t upon L sin pi x upon L plus minus b upon 4 sin 3 pi c t upon L sin 3 pi x upon L. स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन